Ma'am, please begin. What's your name? Vaishali. Hello, good morning everyone, and thank you for joining today's webinar. Today, Applied Sciences and Humanities Department of Parul Polytechnic Institute have scheduled webinar on life, stress and anxiety. I, Vaishali Nathwani, would like to introduce today's guest speaker, mental health and wellness counselor, Ms. Naninder Kaur. She is the author of The Phoenix, From Ashes to Rebirth, Woman Power of Unleashed, who helps women to recognize and raise the phoenix in them and live a supremely empowered and delighted life. She is fully in charge of her journey and teaches how to live life to the fullest. She believes that women are the strongest pillars on the planet. She is the founder of the Phoenix Healing Therapy, that is PHT, a renowned mind and health therapist. She resolves issues in child, adult, and adolescents with physical, mental, and emotional feelings. She has achieved International Achievers Award in 2021 for excellence in women empowerment and have also won Women Power Influence Awards in 2021 and India Top 100 Women Icon Award in 2021. It's a privilege to welcome here you, ma'am, on this platform. Thank you so much, Vishali. Thank you, everyone, and thank you all the viewers. Thank you, Parul University and Mr. Hemal Patel for inviting me on your esteemed platform today to talk about life, stress, and anxiety. First of all, I would like to tell something about, we'll talk about today what is anxiety and what are anxiety disorders, how we cope up with life and stress, and how anxiety disorders become so aggressive that we don't even know where we are going. So let's talk about today anxiety. So what is the meaning of anxiety in our life? Anxiety, in a way, it's good that it is healthy because we reach our goals, we reach our destinations. If anxiety is not there, then we will be in the comfort zone. We will not be able to do anything. We will not be able to get the results. So anxiety is a normal reaction to stress. It helps one deals with a tense situation in the office, like if we have some pending work in the office and we are not able to take the set the goals that this date, this is the deadline, what we are thinking of to clear it, to do the specified target. And if the healthy anxiety is not there in ourselves, then we will not be able to reach that goal. So basically, if we talk about anxiety in detail, that this is something very common, anxiety, and one should have anxiety, a healthy anxiety, and we are not alone. You are not alone. I am having anxiety as well. Earlier, when I was about to start this webinar, so there was an anxiety in my mind that how will it happen? How will I do this? And this is something anxiety. And will I be able to complete all the things what I have I'm thinking about? So this is a healthy anxiety, which gives us to reach our goal, to reach our destination. So anxiety, you feel uneasy, your worries and stress gets increased little bit till the time you don't reach your destination. So this is something that gives you focus. This is something which gives you to cope up with the result. And but it is good in some situation. And if it is there without any reason, without any mission, and without any vision, and it is getting increased without anything, and it lasts for like 6 months, then it means that you have an anxiety disorder. And I'll tell you how you get the anxiety disorder and how you can cope up with these things. So be with me in this webinar for next 1 hour. You'll get all the details about anxiety, about stress, about how to cope up with all these things. So stay tuned till 1 hour more. So we'll talk a little bit about more of anxiety.
सो एंजाइटी कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? सो एंजाइटी के कॉमन सिम्टम्स होते हैं लाइक फीलिंग नर्वस, रेस्टलेसनेस, बॉडी लिटिल बिट ऑफ पैल्पिटेशंस, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है हमारी, एंड थोड़ा डेंजर होता है एंड पैनिक लगता है, ब्रीदिंग रैपिडली, इंक्रीज ऑफ ब्रेथ होता है, प्लस ट्रेम्बलिंग, स्वेटिंग and feeling weak or tired and trouble concentrating on some task. So this is something anxiety, which is like your body's natural response. And let's take an example. Let's suppose I have to go to an interview of my job. This is my first interview. So I'm having anxiety, and which is causing me my heartbeat is getting increased, my this sweating is there, like how will this interview go, will I get this job or not? So till the time I don't go to the interview, my anxiety is there. The time I give the interview, the time I speak out and I get it, then I get normal. This is a healthy anxiety where like you are there to achieve your goals. So now the second question is, this is a healthy anxiety, which is like everybody faces through, everybody goes through it, and like it lasts for long, then it is a stress, then it is a anxiety disorder. So let's talk about something on stress. So stress is an altered reaction of anxiety. So stress kya hota hai? It's any type of change in the body that causes physical, emotional and psychological strain. And it is a feeling of physical emotional tension. जो टेंशन बढ़ जाता है वो एंजाइटी की तरफ जाता है. So it is like a body का reaction कि हमारे पास कुछ काम आया, something, a task, then we get stressed. This is a multitask. Okay, this, so many works are there, and our health gets deteriorated because we don't do it with the time management. We don't focus on one task at a time, and we are doing it multiple tasking without focusing on the segregated things, that how we have to do this with a task. So stress can be positive because that is a time limited. अगर किसी काम के लिए थोड़ा टाइम के लिए स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, वो काम कंप्लीट हो गया, वो स्ट्रेस खत्म हो जाना चाहिए, so that it's a time bound. So it is your body's reaction to challenge or demand. So there are three types of stress, like acute stress is there at times, episodic acute stress is there, chronic stress is also there. So let's talk about stress versus anxiety. कि stress और anxiety में क्या आपस में तालमेल है, क्या इससे होता है, और ultimately result क्या आता है. So stress is generally a response to an external cause, like टॉकिंग अ टेस्ट और आर्ग्यूइंग विद अ फ्रेंड, कि आपकी किसी के साथ बातचीत हो रही है, उसने कुछ ऐसा बोल दिया कि आपको बुरा लग गया, देन यू गेट स्ट्रेस्ड. सो दिस इज अ स्ट्रेस. आपके बॉडी का रिएक्शन चेंज हुआ, केमिकल्स निकले, एंड देन आपकी बॉडी इमोशनली आपका कुछ और चल रहा था, एंड देन यू गॉट your mind and body reactions got changed. That is a stress. So can be a positive and not just always negative. So for example, like healthy stress can feel you meet your deadlines, जैसा मैंने अभी बताया. So generally ये होता है stress में. And what about anxiety, which just we talked about, that it is like internal, meaning it's your reaction to stress. जितना stress बढ़ेगा वो anxiety की तरफ convert होता जाता है, वो धीरे धीरे anxiety में convert होता है, and anxiety आपको फिर उस चीज को बढ़ाने से एंजाइटी डिसऑर्डर बनता है. सो इट कैन बी डायग्नोज्ड. इफ एंजाइटी गेट्स इंक्रीज्ड एंड इट्स मोर देन 6 months, then you have to take an help for a medical professional to take medicines, and have to be on a medication process, which is or psychotherapy or CBT. We'll talk about that in later. And it can be an exposure therapy. So there are many things which can be done for anxiety disorder. So एंजाइटी एंड स्ट्रेस को मिलाने से आपको किस तरीके के रिएक्शंस होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, जैसे बॉडी में अनईजीनेस आ जाती है, टेंशन होती है, हेडेक हो जाती है, बॉडी पेन इज देयर, देन इंसोम्निया की रात को नींद नहीं आती है, रात को भी पैनिक कर रहे होते हैं, सोते सोते थॉट्स आ रहे होते हैं बहुत ज्यादा, एंड यू आर लाइक गेटिंग ऑलवेज इन अ स्ट्रेसफुल मोड.
पेट में दर्द है, स्टमक एक हो रहा होता है, फास्ट हार्ट बीट हो रही है, कि कोई थॉट्स हैं, मल्टीपल थॉट्स, बिकॉज एवरी डे वी हैव लाइक 60,000 थॉट्स इट गोज इन आवर माइंड. सो उससे भी ज्यादा अगर चल रहे होते हैं, विच इज लाइक वी आर हैविंग एन एंजाइटी डिसऑर्डर, एंड एंजाइटी इज देयर इन आवर बॉडी एंड माइंड, फास्ट हार्ट बीट हो रही है. सो इतनी सारी लोगों को हेल्थ इश्यूज हो रहे होते हैं, विच इज वेरी वेरी कॉमन. But the thing is कि people don't know, we even don't know what we are going through. We don't believe कि हमें ये problem है. We should accept it कि है, तो there is a way out as well to come out of it. So you have to first analyze and you have to accept this. This is something going on in our body and mind. It is regular. So you should need a consultation. You need a help for a professional. So let's talk about something about anxiety disorder. So anxiety जब बढ़ जाती है, which is like more than 6 months, so it becomes an anxiety disorder. So anxiety disorder it's a type of a mental health condition, which is like anxiety makes it get through long during the day. जब हमें कुछ सारे दिन में कुछ ऐसा टास्क नहीं है, still we are getting anxiety बिना किसी टास्क के भी, then इसका मतलब है that we are having some issue going on in our body, in our mind, which we should consider it, and it's a need of the hour. And we are getting like nervous, we are getting panic, we are getting sweating, rapid heartbeat is there. So this is a symptom of anxiety disorder. So treatment and including medications are there, CBT, cognitive behavior therapy is there, psychotherapy is there, behavior therapy is there, plus meditations, mindfulness, and your lot of healthcare techniques are there, which will help you to come out of it, which will you can cope up with all these things. So it is like a mental health condition. That's what I just told about anxiety disorder. It's a mental health condition, and you may respond to certain things like situations with fear or dread, or like you may also experience फिजिकल साइंस ऑफ एंजाइटी, स्वेटिंग हो रही है, आपको पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है, और एकदम बीपी हाई हो रहा है, इश्यूज आ रहे हैं. सो दीज आर कॉल्ड सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर. सो बेसिकली एंजाइटी डिसऑर्डर कितने टाइप का होता है? सो व्हेन एंजाइटी बिकम्स एन एक्सेसिव, irrational dread of every situation, it has become a disabling disorder. So there are 5 major types of anxiety disorders, which is like generalized anxiety disorder, obsessive compulsive disorder, panic disorder, post-traumatic stress disorder, and phobic disorder. So we'll talk about one by one कि ये anxiety disorder होते किस टाइप के हैं, इसमें क्या क्या होता है, और like हम अपने आप को रिलेट कर सकते हैं क्या, हम इन चीजों से तो नहीं निकल रहे हैं, एंड ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, क्या ये नॉर्मल हैं, क्या ये इन चीजों से हमें नुकसान कितना पहुंच रहा है, और क्या ये हम एनालाइज भी करते हैं क्या क्या कि हम एंजाइटी से निकल रहे हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. एंड उससे पहले okay, let's talk about what is generalized anxiety disorder. So with GAD, which is like generalized anxiety disorder, जैसे it is very common, exaggerated worry है, tension है, even though there is little or nothing to provoke about it. Anticipate disasters की तरफ हमें negative ही सोचते जा रहे हैं हर टाइम पे. Overly concerned है कि स्कूल जाना है, बच्चे ने ट्यूशन गया कि नहीं गया, खाना खाया कि नहीं गया. घर में ये बड़ी कॉमन है कि पेरेंट्स को, मदर्स को ये चीज होती ही होती है कि जनरलाइज एंजाइटी में मैंने देखा है, अपने ही घर में देखा है कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा एंजाइटी रहता है कि हर चीज में अभी खाना खाया कि नहीं खाया, स्कूल गया कि नहीं गया, कॉलेज कोई गया है कि नहीं गया. सो दिस इज समथिंग वेरी मच कॉमन, विच इज अ कंप्लीटली एक्सेप्टेबल थिंग कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, कि जबरदस्ती की एंजाइटी लेने की आदत है, विच इज लाइक थिंग्स आर गोइंग ऑन but you have to take the worry because this is your habit now. So this is called generalized anxiety disorder, and it is like a anticipate disaster and all over concerned about health issues. इससे बहुत ज्यादा health issues हो जाते हैं.
अननेसेसरली के मनी, फैमिली प्रॉब्लम्स, ये सारी डिफिकल्टीज जब आप अननेसेसरली अपने ऊपर लेना शुरू होते हो, सो उससे क्या होता है कि आपकी हेल्थ में, बॉडी पार्ट्स में कहीं ना कहीं इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। और देन यू गेट धीरे 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 आपकी एज के साथ, आपकी बॉडी के साथ सिम्टम्स नजर आने शुरू होते हैं। सो फिजिकल सिम्टम्स ऑफ जीओडी इज लाइक रेस्टलेसनेस होनी शुरू हो जाती है, डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग एंड स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हैं, इंसोम्निया की दिक्कत आती है, एंड हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड फियर, सोशल ट्रॉमास एंड ये सब चीजें भी नजर आनी शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज कॉल्ड एन जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. This is like these are the symptoms. Excessive anxiety and worry होती है इस केस में. Increased muscle aches and soreness, बॉडी में बॉडी के मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, फटीग शुरू हो जाता है, then your body is restless and then impaired concentration. हम एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं हर बार, इरिटेशन रहती है हर टाइम पे, डिफिकल्टी है सोने में, रात में भी नींद पूरी नहीं हो रही है, नींद नहीं आ रही है. सो दिस इज ऑल जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. सो लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स. इनके सिम्टम्स ये है, इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन है, इरिटेबिलिटी है, जैसे मैंने अभी बताया कि नींद नहीं आती है, इंसोम्निया कहते हैं उसको, एंड इंक्रीज एसिडिटी है, नॉजिया की फीलिंग आ रही है. ये बड़ी लॉन्ग टर्म फिर जो चलती रहती हैं, दिस हैज बिकम दैट बिकम्स अ डिसऑर्डर. हेडेक रहता है, सिम्टम शुड बी एटलीस्ट 6 months. ये नॉर्मल तरीके में अगर चल रहा है तो ये बढ़ता जाता है फिर. सो दिस इज ऑल अबाउट GAD, which is like generalized anxiety disorder. So let's talk about obsessive compulsive disorder. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है कि हमें एक ही चीज को रिपीट करने की आदत पड़ जाती है, एक पैटर्न बन जाता है लाइफ में, कि पैटर्न ऑफ अनवांटेड थॉट्स एंड फियर्स, जबरदस्ती के थॉट्स एंड फियर्स को हम बार बार सोचते हैं और ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, और कंपल्शन रहती है हमें कि ये इससे हमें ये तो नहीं हो जाएगा, और हम रिपीट टास्क करना शुरू हो जाते हैं. रिकरेंट थॉट्स आती हैं हमारे पास, इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं, कंपल्शंस हमारे बार बार वो चीजें करने को रहते हैं. जैसे अगर किसी को OCD है, वो बार बार हाथ धोएगा जाके, वो हैंड वॉश करने जाएगा, साबुन से हाथ धोएगा, उसको लगेगा कि कहीं ये मैं अगर हैंड वॉश नहीं करूंगा या करूंगी तो मुझे ये बीमारी ना हो जाए. कोविड के केस में चलो हमने हुआ सारी चीजें, बट इट हैज बिकम OCD फॉर सम पीपल कि वो हर टाइम पे हैंड वॉश कर रहे हैं, हर टाइम पे चेक कर रहे हैं कि मैंने अपनी गाड़ी की चाबी, गाड़ी लॉक की है कि नहीं की. सो दिस इज कॉल्ड एन OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एंड विच इज लाइक अ counting out to 100 so that the obsessive thought of will not happen. इसमें क्या करते हैं कि अगर हमें ज्यादा OCD का लग रहा है कि बार बार एक चीज को चेक कर रहे हैं, तो 100 तक की काउंटिंग, 1 2 3 4 की काउंटिंग अगर हम करते हैं, एंड 100 to 1 ऑपोजिट, सो इसका इफेक्ट कम हो जाता है. सो इफ एनीबडी इज हैविंग दिस काइंड ऑफ इशू ऑफ OCD, दे कैन ट्राई 1 to 100 की काउंटिंग एंड उसका ऑपोजिट. सो उससे आपको बहुत इफेक्ट, उसको बहुत ही बेटर फील करेंगे आप उससे. एंड दिस इज कॉल्ड OCD. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन OCD and OCPD? So OCD is, it's a mental illness marked by recurrent intrusive and unwanted thoughts and repetitive behavior. And that's what I just told about कि OCD होता क्या है. And जिन लोगों को OCD होता है and they are marked with anxiety or distress or like their symptoms ultimately, and then it fluctuates. So these are the OCD symptoms, and OCPD is a personality disorder. So OCPD में क्या होता है कि आप हमेशा किसी के कंट्रोल में हो, कि आपको खुद कोई डिसीजन लेने की आदत नहीं है, आप किसी ना किसी के कंट्रोल में हैं, लाइक स्ट्रिक्ट ऑर्डरलीनेस, और साथ में परफेक्शनिज्म की आदत पड़ जाती है कि आपको हमेशा परफेक्ट दिखना है, which is like nothing, there's no word in my dictionary is perfect. Nobody is perfect in this world. So OCPD traits tend to be persistent over time. So there's a difference between OCD and OCPD. Okay, so let's talk about panic. So third is the panic disorder, कि हम लोग, कई लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं. पैनिक अटैक का क्या मतलब होता है, कि पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है, ऐसा क्या होता है पैनिक में कि एकदम से हमें लगता है कि इसको क्या हो गया, राइट? सो दिस इज समथिंग अबाउट पैनिक. सो सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक्स
ओवरवेलमिंग एंजाइटी होती है, बहुत तेज कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसका हार्ट पाल्पिटेशंस तेज हो गए हैं, बहुत तेज ब्रीदिंग शुरू हो गई है, चेस्ट पेन हो रहा है, नॉजिया है, उसको वॉमिटिंग की फीलिंग भी आ रही है, स्वेटिंग भी हो रही है, एंड फियर ऑफ डाइंग, उसको लग रहा है कि मैं मर रही हूँ, एंड देन लूजिंग माइंड कंट्रोल, बिल्कुल लूज हुआ होता है, एंड इट कैन लीड टू lot of other symptoms. So this is called a panic disorder, which is like if you have a panic disorder, you get intense sudden panic attacks. तो panic attacks में क्या होता है basically, these are the unexpected symptoms होते हैं कि चीखना, चिल्लाना और जोर से रोना, and then sweating भी हो रही है. These are the panic attacks and panic symptoms, and there's a fear of terror as well. अंदर से suddenly unexpected डर लगता है कि अब क्या होगा. These are like, and these are the symptoms which goes to heart attack. So this is something, a symptom of panic disorder. So hypersensitivity of locus coeruleus in brain alarms stem for fight or flight mode. इस situation में हम क्या करते हैं, या तो fight करते हैं या flight, या तो इस situation से हम भाग जाते हैं या फिर हम लड़ते हैं. So this is something in anxiety, it happens. So this is what about panic disorder. So let's talk about phobic disorders. Phobia क्या होता है? So what are phobias? Phobias कि हमें किसी चीज से डर लग रहा है. So phobias are an intense fear, कि हम अंदर से डर रहे हैं, किस किस चीज से डर रहे हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे हम डरते हैं. So situations होती हैं, objects होते हैं. कई बार हम लोग भीड़ में खड़े हैं, हमें भीड़ में खड़ा होना पसंद नहीं है, हमें डर लगता है, कि हमें भीड़ से डर लगता है, हमें स्टेज से डर लगता है, एंड हमें लोगों से बात करने में, सोशल होने में डर लगता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स इन फोबिया which we get scared about. So let's talk about phobia. So it is an intense, irrational fear of specific object or situation. So this is called most intense fear. Untimely death, early death हो जाती है किसी की, तो वो हमें एक डरावना सा वो चीज दे जाती है हमारे दिमाग में कि किसी की अनटाइमली डेथ हो गई. वो फोबिया हमारे दिमाग में हमेशा के लिए है. सो अब हम उससे कैसे निकालें उसको. सो दिस इज समथिंग ऑफ अ फोबिया. इलनेस है, इंजरी ऑफ इलनेस और डेथ ऑफ अ लव्ड वन, कोई चला गया अचानक से, तो वो एक डर बैठ गया हमारे अंदर. स्पीकिंग बिफोर अ ग्रुप, किसी भीड़ में बात कर रहे हो, किसी से भी बात करो, तो दिस इज अगेन ऑफ फोबिया. सो हमें जानवरों से डर लगता है, किसी को स्नेक से लगता है, किसी को लिजर्ड से लगता है. सो दिस इज समथिंग कम्स आउट इन अ फोबिया, एंड this is at times very suffocating because people get scared by phobia, और वो इन चीजों से निकल नहीं पाते हैं, अंदर से फिर डर लगना शुरू हो जाता है कि इस चीज से निकले कैसे. So let's talk about what are the types of phobia, कि क्या क्या तरीके के फोबियाज होते हैं कि जो हमें इन चीजों में हमें लेके आते हैं. सो सोशल में क्या होता है, फियर ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी, कि हम यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, राइट, तो उसमें अब आपको अल्टीमेटली कुछ स्पीक आउट करना है, देन यू हैव अ फोबिया ऑफ स्टेज. सो दिस इज समथिंग सोशल. And then this is the most common phobia. People don't speak out in public, and there is a embarrassment. So they don't want to take it in the front of people. So extreme shyness in childhood, कि बचपन से बच्चे को अगर आपने स्टेज फियर हटाया हो, या बचपन से उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी की हो, और तो उसका आगे जाके करियर और स्टेज फियर भी निकल जाता है. सो बेटर यू शुड टेक केयर ऑफ दैट. उसका अभी जिस बच्चे की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, तो उसका स्टेज फियर निकालना बहुत जरूरी है, बिकॉज लाइफ में देयर आर सो मेनी थिंग्स, वी आर इवॉल्विंग, एंड देयर इज टेक्निकली एवरीथिंग इज लाइक गोइंग सो हाई. सो स्टेज फियर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है. सोशल मॉडलिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी डन. सो दैट इज कॉल्ड फोबिया. फोबिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? सो लेट्स टॉक अबाउट एकोराफोबिया, एक्रोफोबिया जो हमें हाइट से डर लगता है, कि हम ऊंचाई पे हैं और अगर हम नीचे देख रहे हैं तो हम डर रहे हैं कि ये तो ये डर है, बट वी डोंट इवन ट्राई टू गो, कि हम उस पर जाना ही नहीं चाहते क्योंकि हमें डर है, तो हम ट्राई भी नहीं करते हैं. दिस इज कॉल्ड द एक्रोफोबिया. व्हाट इज एगोराफोबिया? एगोराफोबिया कि हमें भीड़ भाड़ वाली जगह से बहुत डर लगता है. क्लोज स्पेसेस एंड शॉपिंग मॉल्स, सोशल सिचुएशंस, ट्रैवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दिस इज कॉल्ड एगोराफोबिया. कुछ लोगों को इन चीजों से डर लगता है,
विच इज इस भीड़ भाड़ में जाने से तो पहले ही कतराते हैं कि नहीं जाना है. सो देर इज इट इज अ सिम्टम ऑफ एगोराफोबिया. एल्गोफोबिया इज अ पेन, कि पेन से डर लगता है, विच इज एल्गोफोबिया. क्लॉस्ट्रोफोबिया इज क्लोज स्पेसेस, कि बंद जगह है, कोई छोटी सी जगह है जहाँ पे एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक सा एनवायरनमेंट है. सो पीपल डोंट generally prefer to go in a claustrophobic things. So these are the symptoms. Simple phobia is discrete object. Social phobia is personal interaction in a public setting and speaking, eating in public. So this is a social phobia, कि लोगों के सामने अच्छा नहीं लगता खाना या उनसे बात करना या उनसे डिस्कनेक्ट रहना ही पसंद है. So this is something a social phobia. जूफोबिया होता है एनिमल से डर. जेनोफोबिया इज स्ट्रेंजर्स से डर होता है. सो दिस इज ऑल द फोबिया डिसऑर्डर्स. दीज आर द टाइप्स ऑफ फोबिया which we go through. Okay, so okay, the next is post-traumatic stress disorder. So what is that post-traumatic? So trauma के बाद जो हमें disorder होता है, which is called a post-traumatic stress disorder. So basically हम किसी trauma से निकले हैं, किसी childhood में कोई trauma हुआ है, बचपन में किसी के साथ कुछ हुआ है, या एक adult stage में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिस चीजों में से हम निकल रहे होते हैं. एंड वो ट्रॉमा हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में पूरा इनबिल्ट हो जाता है, हमारे पूरी की पूरी हार्डवायर्ड तरीकों में हमारी नर्व्स में चला जाता है. वो ट्रॉमा हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी बॉडी के अंदर है, बट वो हम कैसे निकालें और वो हमारे को करता क्या है अल्टीमेटली. सो टिपिकली दिस इज लाइक इवेंट हुआ हमारी लाइफ में कुछ ऐसा, अगर कोई क्राइम हुआ है या कोई वॉर हुई है या हमने देखी है, हमारे घर में कोई कुछ ऐसा एपिसोड हो गया, तो वो री एक्सपीरियंस हो रहा होता है और वो ट्रॉमा को हम फ्लैशबैक बोलते हैं. उसको उसमें ड्रीम में आ रहा है हमारे कि हमारे साथ ये हुआ है, ये बुरा हुआ है, वो फ्लैशबैक्स चल रहे हैं. सो दिस इज अ लाइक अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग एसोसिएटेड विद ट्रॉमा. दैट इज अ कॉन्स्टेंट हाइपर विजिलेंस. सो सेंस ऑफ हैविंग नो कंट्रोल ओवर द ट्रॉमेटिक इवेंट, कि हमारा उस ट्रॉमा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था बट वो हो गया, और वो होने के बाद हमें ये इस तरीके के फ्लैशबैक्स आने शुरू हो गए कि बार बार रिपीटिशन आ रहा है उसी फ्लैशबैक का, बार बार चल रहा है. तो दिस इज अ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. सो नेगेटिव हो जाता है इंसान, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आती है, एंड दीज आर द सिम्टम्स कि वो बार बार वही रिपीट करता है, थॉट्स वही चल रही होती हैं उसी ट्रॉमा की ही जो आपके माइंड एंड बॉडी में है. So major events in life is like war. I told you about child abuse. बचपन में बच्चे को गालियां दी हैं, बच्चे को बहुत अब्यूज किया है, घर में बहुत कुछ चल रहा होता है, उसके सामने लड़ाइयां हो रही होती हैं. So the child is taking, inhaling everything since birth, and he is imbibing in his thoughts कि वो बच्चे को पता है कि हाँ यही होता है, यही घर का माहौल है, ऐसे ही दुनिया चलती है. तो जितनी चीजें वो घर में ट्रॉमा देख रहा होता है, he is taking it, and उसकी अपब्रिंगिंग वैसी हुई होती है. अपब्रिंगिंग वैसी होने के बाद he is having a PTSD. So this is a trauma. अब वो बच्चा जब बड़ा होके वही चीजें रिपीट करेगा with somebody else or with again with his parents or somebody, then it is a flashback because it has been done since his birth. So this is something a PTSD disorder, which is like child abuse. एंड देन एक्सीडेंट्स होते हैं, और इससे आई टेल यू दिस इज लाइक PTSD से बहुत सेल्फ एस्टीम बिल्कुल खत्म हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, एंड बहुत सारी चीजों का डाउनफॉल होता है. इट्स बेटर नॉट टू डू इन फ्रंट ऑफ यू, नॉट टू डू इन फैक्ट एट होम. कुछ भी ऐसी चीजें करने से पहले 10 बार सोचें, बिकॉज इससे आपके घर में आपकी फैमिली को क्या, एनवायरनमेंट के बाद आपको क्या फर्क पड़ने वाला है, और आपकी फैमिली लाइफ एंड आपकी रिलेशनशिप्स पे क्या फर्क पड़ने वाला है आफ्टर हैविंग this fights and your child abuse. Then accidents होते हैं, unexpected death हो जाती हैं, then that's a trauma. earthquake आ जाता है तो ट्रॉमा होता है. फ्लड आ गया, अचानक से बहुत लोग मर गए, तो there is again a PTSD. So these are the causes with fear belief that world is a dangerous place, कि दुनिया में तो कुछ है ही नहीं है, यही दुनिया है, यही जीवन है, ऐसे ही जीना है. सो इस तरीके से उनका थॉट प्रोसेस बन जाता है, लाइफ की तरफ उनकी पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है. सो लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट आफ्टर ट्रॉमा, बहुत सारी चीजें आती हैं जो PTSD के अंदर आती हैं. यू शुड टेक केयर ऑफ इट, दैट व्हाट टू टॉक एंड व्हाट नॉट टू टॉक.
Okay, so these are the symptoms कि rape हो जाता है. There is a huge trauma for this because that's a lifetime trauma. So this is something, a very acute sexual assault is there, and a lot of things are there. Then the female who had gone through for a PTSD disorder, because she had gone through a huge part of it, victim. So this is anxiety results from the disturbance. Anxiety क्या करती है? Disturbance from the cerebral cortex, especially from the limbic system. This is something part of a medication, primarily associated with the neurotransmitters, कि आपके brain में chemicals निकल रहे होते हैं, and then overactivation, underactivation, ये सब कुछ चल रहा होता है. एंड जब ये केमिकल्स निकलते हैं तो बॉडी में रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं. सो दैट्स अ न्यूरो पार्ट which is a reaction of anxiety. So pathologically, anxiety results from disturbance in the cerebral cortex, especially in the limbic system. So this is happening in your brain part, which is going through, and then you are reacting accordingly to your body. And that's you can see that there's a cerebellum where is there, and locus coeruleus, and these are the brain के सबसे important parts हैं जहां से आपकी सारी फंक्शनिंग चल रही होती है. एंड हाउ टू डू दैट, ये सारी चीजें सिस्टमैटिक होती हैं. जैसे ही आपना कोई रिएक्शन हुआ, आपके ब्रेन में से केमिकल्स निकले, और वो केमिकल्स आपके जो हैं वो रिएक्शन में कन्वर्ट होने के बाद आपकी बॉडी में रिएक्ट कर रहे होते हैं. सो और वो सारा का सारा ब्रेन का केमिकल चेंजेस होने के बाद आपकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो फिजिकली दिखने शुरू हो जाते हैं. राइट. तो अभी तक हमने जो पढ़ा about anxiety disorders. So let's talk about something about social anxiety disorder as well. So there are social anxiety disorders जो मैंने अभी पहले बताया था कि social anxiety disorder भी होता है. कई लोगों को लोगों से मिलने की आदत नहीं होती है, सोसाइटी में जाने की आदत नहीं होती है, उनको सोशल होने की आदत नहीं होती है, और वो हमेशा उन चीजों से नेग्लेक्ट करते हैं, हटते हैं. सो दिस इज अगेन पब्लिक में जाना उनको पसंद नहीं है. वो चीजें भी एक एंजाइटी डिसऑर्डर में आती हैं. सो दिस शुड टेक केयर ऑफ कि एक दूसरे से मिलो, हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाओ, talk to people, talk to other person, you share your feelings, then you come out of this anxiety, social anxiety disorder. And one is separation anxiety disorder. सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? जनरली बच्चों में होता है. बच्चों में क्या होता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे कहीं छोड़ के ना चले जाएं. वो घर में जब अपब्रिंगिंग ऐसी होती है तो बच्चों में एंजाइटी शुरू हो जाती है कि सेपरेशन की, कहीं मम्मी बाहर तो नहीं चले गई, फादर बाहर तो नहीं गए हैं, मेरे को अकेले नहीं रहना है. तो दीज आर द थिंग्स दे एक्सपीरियंस अ लॉट, व्हिच इज लाइक सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर. एंड इट इज लाइक देयर इज अ सिम्टम. क्यों होता है ये? क्योंकि अगर बच्चे ने घर में सेपरेशन की बातें सुनी है कि पेरेंट्स साथ में नहीं है, दे डोंट, देयर थॉट्स डजंट मैच, तो वो आपस में लड़ाइयां कर रहे होते हैं. देन इट कम्स आउट इन द चिल्ड्रन माइंड दैट इट इज देयर इज अ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन इन मोस्ट केसेस. ओके, लेट्स टॉक अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स. सो ट्रीटमेंट क्या इसका कर सकते हैं? सो विल टॉक अबाउट देयर आर ट्रीटमेंट. पहली बात तो ड्रग थेरेपी होती है कि अगर हमें लग रहा है कि एंजाइटी इतनी बढ़ चुकी है कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, you should go for medication. There's no harm in it, क्योंकि ultimately your health is more important. So drug therapy, which is like medication therapy, you should go consult a doctor. You should consult a good professional for that. And the second thing is you should consult a psychotherapist, psychotherapy, and then mental health and wellness counselor. Plus, lots of things can be done for your mental wellness. So let's talk about that. So treatment क्या होगी इसकी? So treatment choices depend upon the problem. कितनी severe problem वो आपको वो पता चलेगा when you get it tested. कि आप किस level तक की anxiety बढ़ी हुई है और उसकी depth कितनी है. Then it gets treated. So what are the treatments? Drug therapy में क्या क्या हैं जो आपकी antidepressants होती हैं? Drug therapy is benzodiazepines, SSRIs,
beta blockers. So these are the medical treatments of anxiety. जिसके अंदर classified benzodiazepines हैं and lorazepam and nitrazepam है. These are the medicines which are the treatment of anxiety disorders. You can get to know all the details with the doctor about GABA and about the drugs about anxiety disorders. And other therapies of anxiety disorders are like beta blockers, like propanol, and psychotherapy, cognitive behavior therapy, which I do for CBT, exposure therapy, or psychotherapy. So let's talk about psychotherapy. Psychotherapy क्या होता है basically? Psychotherapy is a kind of it's also called as counseling, which is like the person comes to the counselor and she talks or he talks about the problem कि वो क्या उस चीज से गुजर रहा है, क्या निकल रहा है. तो it is a form of a treatment of psychological, emotional और your behavior disorder. कि आपका behavior किस तरीके से, आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप behave कर रहे हैं, आपके कंट्रोल में कितना है, प्लस आप उस चीज को आप ले भी पा रहे हैं कि नहीं, कि आप उसको कंट्रोल अपने कर भी पा रहे हैं कि नहीं. सो इट हेल्प्स पीपल विद अ ब्रॉड वैरायटी ऑफ मेंटल इलनेस एंड इमोशनल डिफिकल्टीज. कि आप इमोशनल हैं तो आप रोने लग जाते हैं, और आप अगर मेंटली इल हैं, आपको नहीं पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड आपको तब जरूरत होती है साइकोथेरेपिस्ट की, अ काउंसलर की. तो दिस इज कॉल्ड साइकोथेरेपी. And what about cognitive behavior therapy? क्या होती है? CBT is cognitive behavior therapy. It is a talking therapy कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, and then can help you manage your problems by changing the way you think and behave. आपकी thoughts क्या हैं, आपके patterns क्या जा रहे हैं, आपका behavior क्या जा रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपका thought process बिल्कुल ही negative जा रहा है, या उस thought process में मैं क्या changes ला सकती हूँ, आपके wordings क्या हैं, आप बोलते क्या हो. So this is called, ये cognitive behavior therapy में आता है, and it teaches you to recognize thoughts about patterns कैसे हैं आपके बात करने के, behavior क्या है that lead to a troublesome, आपको provoke करने वाला behavior अगर आपका लड़ाई करने वाला है, कि आप violent हो जाते हो एकदम से, और आपकी feelings क्या आ रही हैं उस टाइम पे आपको पता ही नहीं है. So ये CBT में आता है. It is used to treat एंजाइटी एंड डिप्रेशन. ये CBT यूज होता है एंजाइटी के केसेस में, डिप्रेशन के केसेस में, एंड बेनिफिशियल फॉर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स. सो दिस इज समथिंग CBT में विच आई डू फॉर अ लाइक 12 weeks प्रोग्राम, क्योंकि CBT एंजाइटी पेशेंट्स या डिप्रेशन के पेशेंट्स को टाइम चाहिए होता है उनकी थॉट समझने में, उनका बिहेवियर समझने में, उनके पैटर्न्स को समझने में. तब उसमें गोल सेटिंग होती है, बिहेवियर होता है, आइडेंटिफाइंग द थॉट्स, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट देयर बिहेवियर, व्हाट दे आर सेइंग. तो फिर उनकी थॉट्स को रिप्लेस किया जाता है, उनके बिहेवियर को चेंजेस किया जाता है, उनके अंदर से वो एक्चुअली दिस योर एक्टिवेट किया जाता है उनके बिहेवियर को, कि आप बोलते क्या हो और आपको बोलना क्या चाहिए, रिप्लेस की जाती हैं आपकी थॉट्स. देन मेंटेनिंग माइंडफुलनेस मेडिटेशंस के थ्रू, प्लस आपकी रिप्लेसमेंट्स ऑफ योर एक्टिवेशन ऑफ योर थॉट्स एंड बिहेवियर, प्लस आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की चीजों को हटाया जाता है. सो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. एवरी वीक आपको एक सेशन मिलता है, उसके बाद आपको पूरे हफ्ते का टास्क दिया जाता है. पूरे हफ्ते के टास्क में आपको जो काम दिया है वो आपको करना है. आपको किन लोगों से टॉक्सिसिटी से दूर रखना है, क्या आपको डेली एक्टिविटी करनी है, क्या आपको गोल बनाने हैं, छोटे छोटे गोल बना के कैसे 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 आपको आगे पहुंचना है. सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ CBT which is like minimum it's a 3 months process to get some results, and then slowly your whole behavior and your whole pattern of the thoughts will get changed. So this is very, very beneficial thing of CBT for mental and physical health disorders. Plus it is very, very useful to make goals, to do the life vision and mission, which is like CBT से आपको आपकी mental wellness तो मिलती है, but आपको आपके goals भी नजर आने शुरू हो जाते हैं. So this is something very useful for everyone. And how let's talk about CBT I told about. Now exposure therapy में क्या होता है कि आपको exposure दिया जाता है जिन चीजों से आपको डर लगता है. So exposure क्या है कि अगर मुझे किसी चीज से social चीजों से डर है, या मुझे stage से डर है, या मुझे कोई ऐसी चीजों से डर है, फोबिया है मेरा,
तो वही चीज का एक्सपोजर आपके सामने रखा जाता है और वो चीज आपके सामने एक फिल्म की तरह आपको प्लेस कर रहे होते हैं ताकि आपका डर निकले और आपको एक्सपोज किया जाए सो दैट कि वो फ्लैशबैक अगर है तो फ्लैशबैक को दोबारा से आपके सामने करके आपके माइंड को आपको ट्रांस स्टेट में ले जाके करा जाता है. सो दिस इज कॉल्ड योर एक्सपोजर थेरेपी एंड which is like I see that like when I do sessions for meditation or for to taking in the person in a trance state, तो उसको उसकी ब्रेन की जो ट्रांस स्टेट में उसको रिवायर किया जाता है. बेसिकली उसका जो फ्लैशबैक है या कहीं कोई पैच रह गया है कि कोई थॉट प्रोसेस है वो कहाँ है, तो वो कहाँ है उसको ही ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो थेरेपी की जाती है. सो आई एम अ थेरेपिस्ट डूइंग healings as well. These things are like embedded with the mixing of healings, mindfulness plus your therapy and this your catharsis therapy as well, which I do to come out, like to take your whole negative thoughts out and then to give you a full mindfulness, which comes in the CBT process as well. So that's one part of CBT. So how to manage anxiety? हम एंजाइटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं? एंजाइटी हम इसके बारे में पढ़ के कि हमें ये प्रॉब्लम तो नहीं है, लर्निंग अबाउट एंजाइटी कुछ पढ़ के हमें पता चल जाएगा. माइंडफुलनेस में आपके लिए बहुत सारी चीजें आती हैं. सो माइंडफुलनेस कैसे करते हैं? डीप ब्रीदिंग, बिहेवियर, डीप ब्रीदिंग, ब्रेथ टेक्निक्स के थ्रू. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन लर्न इट फ्रॉम द यूट्यूब कि आपको कौन सा ब्रेथ टेक्निक अपनाना है. कपाल भारती इज देयर एंड लॉट ऑफ breathing techniques are there which you can do that. Yoga and then doing meditations as well. There is the way to connect with the universe and then you get that mindfulness. And relaxation techniques में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं to relax yourself, your mind and body and your soul. So you can find out what kind of relaxation techniques you want to apply on yourself. Behavior therapy, आप अपना behavior कैसे change कर सकते हैं? You can get the consultation of counseling. So counseling, it's like as I told you, I'm a counselor. So I help people to counsel. one-to-one counseling भी करती हूँ. Not only this your session one-to-one में group के साथ साथ मैं single counseling भी करती हूँ. If anybody wants any help for the counseling purpose, you can contact me for that. सो डाइटरी, आप अपनी डाइट चेंज कर सकते हैं, आपने खाने पीने की रूटीन चेंज कर सकते हैं. देन योर एक्सरसाइज शुड हैव अ एक्सरसाइज regime that's like yoga or your gym, whatever you feel like, whatever you have desire for, you should join that. And learning to be assertive, which is like positive always, कि कोई ना कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन भी होता है. Better to wait, better to think about the opportunities, not the outcomes or not the problems about that, because opportunities comes to those people who are positive and who wants to take it. So building self esteem, आप अपना confidence बढ़ा के रखिए, आप अपनी self esteem को हाई रखिए तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी ही आएंगी और एंजाइटी कम रहेगी. बिकॉज जब हम पैनिक रहते हैं, हम एंजाइटी, जिन लोगों को हमेशा प्रॉब्लम रहती है ना, तो प्रॉब्लम्स भी उन्हीं के पास ही आती हैं. लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, फोबिया, और वो जो हमेशा स्ट्रेस रहते हैं तो उनके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम्स अटैक करती हैं. सो बेटर टू स्टे पॉजिटिव एंड सेल्फ एस्टीम हाई रखें एंड कॉन्फिडेंस हाई रखें, तो ये चीजें आपके ऊपर नहीं आएंगी. ग्रुप्स की हेल्प लीजिए, किसी से कंसल्ट कर लीजिए, किसी की हेल्प ले लीजिए कि जो आपको सपोर्ट कर सके. मेंटोर्स बनाइए, कोचेस लीजिए, सो दैट कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला हो. आप कहीं मुसीबत में पड़े हैं, कहीं फंसे हुए हैं, देयर शुड बी समबडी टू गाइड यू कि आप इस तरीके से कर सकते हैं. सो दिस इज द वे आउट टू हेल्प यू कम आउट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. सो व्हाट यू कैन डू, keep physically active, जैसे मैंने अभी बताया, and develop a routine.
कि आप अपनी रूटीन चेंज कीजिए। अगर आप लेट उठते हैं 10 या 11 बजे एंड यू डोंट हैव एनी रूटीन इन लाइफ, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज योर टाइम एंड एवरीथिंग। सो बेटर टू मेक योर डे इन एडवांस। एक दिन पहले ही रूटीन बनाइए, एक टू डू लिस्ट बनाइए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि मेरे को इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये। सो योर माइंड विल टेक दैट। और अगर ये रूटीन आप 40 दिन तक आप बना लेते हैं एक चीज की, राइट, योर माइंड इज योर स्लेव। अगर आप उसको अपना स्लेव बना लेते हैं तो आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे, बिकॉज आप मास्टर हैं अपनी बॉडी के, अपनी माइंड के। और माइंड जो है, आप जो उसको कमांड दोगे वो सुनेगा, बशर्ते कि आपका माइंड आपको चलाए। आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रन कीजिए। सो दैट इज द वे टू लिव लाइफ, दैट इज द वे to go ahead and avail all the opportunities in life. And alcohols, drugs avoid कीजिए to relieve yourself from anxiety. Smoke नहीं कीजिए। कैफीन्स, कॉफी कम पीजिए, बिकॉज कैफीन से भी काफी एंजाइटी बढ़ती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स करिए रिलैक्सेशन के लिए। एंड सोना 7 आवर्स मिनिमम इज शुड बी अ प्रायोरिटी। कि रात तक, डे लेट नाइट्स तक लोग जैसे इंस्टाग्राम देख रहे होते हैं, फेसबुक देख रहे होते हैं, 2-2, 3-3 बजे तक ऑनलाइन रहते हैं, सोते नहीं हैं। सो दिस इज नॉट अ गुड हैबिट, दिस शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि आपकी नींद ज्यादा जरूरी है। और अगर आपकी नींद नहीं पूरी होती है, 2 या 3 घंटे या 4 घंटे तक सोते हैं, तो अगला दिन आपका खराब होने वाला है। So, अगर आपने अगला दिन बचाना है, so better you make a routine of that, and better you sleep on time, and you take yourself as a priority कि आपकी हेल्थ ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर आपकी मेंटल वेलनेस नहीं है तो आपकी फिजिकल वेलनेस भी नहीं है। तो मेंटल वेलनेस इन चीजों से आएगी कि आप इन चीजों से, सोशल चीजों, टेक्निकल चीजों से रात के टाइम इसको स्विच ऑफ करके या दूसरे रूम में फोन रखिए, या इसको चीजों को दूर रखिए, so that कि your mental this your brain also can get relaxed. रिलैक्सेशन जरूरी है ब्रेन के लिए भी। So eat healthy, अच्छा खाना खाएंगे तो what you eat is what you are. This is one famous quote, if you have heard about, कि आप जो खाओगे वही देखोगे। तो आप अगर ऑयली खाओगे, ये सब चीजें खाओगे कि जो बॉडी को स्लगिश कर रहा है एंड बहुत थकावा दे रहा है, तो दिस इज समथिंग, आपका रिस्पॉन्स भी वैसा ही होगा। So ultimately, it is in your hands only. So eat healthy, stay healthy, and stay happy. So that's it. Thank you so much. Yes, Vaishali, can we have Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for giving us your valuable time. Thank And you. yes, obviously for such a beautiful presentation. Thank you. Because nowadays we all know that the scenario is very difficult because of pandemic and all. And human life has gone to a very stressed life nowadays, right? Great, great, great. So can we have open to questions? Yes, ma'am. There are 1 or 2 questions from our end. Okay. According to you, which is the best therapy to go through when we are very during the depression life or anxiety? Which is the best therapy according to you? I need to know till like what time the person is going through anxiety or depression. अगर उसका depression बहुत severe है कि वो medical conditions तक है, he should need to consult a doctor. Otherwise, if he wants to take help for sessions for CBT, cognitive behavior therapy, you can give my number. My number is 9868314041. You can give my number, and they can contact me for CBT sessions, so that कि उसके अंदर step by step process रहेगा every week एक session, जिसमें आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स भी सिखाई जाएंगी, प्लस आपको क्या गोल सेटिंग्स करा जाएगा कि किस तरीके की सिम्टम्स हैं। बिकॉज आई टेक फर्स्ट प्री इंडक्शन, मुझे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है उसकी इन डेप्थ में। So that is like a procedure which I can guide and help them. Okay. तो उसके लिए he can or she can, जिसका भी क्वेश्चन है ये, और he or she can start doing meditation, अगर मेडिटेशन कर पा रहा है, थोड़ा ब्रीदिंग टेक्निक्स जो बिल्कुल हल्की चीजें हैं जो मेंटल रिलैक्सेशन के लिए होती हैं, देन स्टार्ट डूइंग दैट बेसिक थिंग्स। और अगर किसी की हेल्प चाहिए तो वो हेल्प ले सकते हैं।
So basic things needs to be done for relaxation of mind and body. Breathing. Does Reiki or what we say healing, does it help during this time also? See, Reiki and healing, I'm an energy healer. I've done both. So, Yes, I read your resume. Yes. yeah. So I mix my CBT with this, of course, yes. So Reiki and energy healing, I give it after 2-3 sessions, not in a first. First, I need to know about the history of the person. What is the all the parts. Then I make the session accordingly, according to the person concerned, what actually he wants, that comes out after first session. तो healing तभी काम करती है जब अगला receptive हो. अगर उसको receptive नहीं है, if he doesn't have faith in God, so it will not work. One thing, first thing, mind. So वो तभी करेगी जब ऊपर वाले के साथ आपका connection रहेगा and you are receptive, that you are receiving to take the energies, to take the divine healings. Then only it will work. Okay. And it works wonders. I'm not telling कि ड्रग को इसके साथ रिप्लेस किया जाए, नो, बिकॉज इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग टू बोथ. कि अगर आप कोई ड्रग ले रहे हो, कोई आप मेडिसिन ले रहे हो, सो वो मेडिसिन को हम हीलिंग के साथ रिप्लेस नहीं कर रहे हैं. आप अपनी जो दवाइयां ले रहे हो वो लेते रहो, बट यस, दिस विल कॉम्प्लीमेंट योर थिंग एंड यू विल गेट वंडर रिजल्ट. Do everyone need some mentor in their life? Yes. Very important. Very, very important, because अब आप seriously, let me tell you, see, अगर आपको life में आगे बढ़ना है, you have some mission, you have some aim in life, तो आपकी हेल्प कौन करने वाला है? आपके घर में वही मेंबर्स हैं, वही चीजें चल रही हैं, घर का खाना पीना बन रहा है, बर्तन धुल रहे हैं, झाड़ू पोछा हो रहा है, सब कुछ काम हो रहा है. But there is no way you are seeing your dreams. Why you have come in this life? Do you have some mission or vision in life? तो वो दिखाने के लिए एक मेंटर की जरूरत होती है, वो दिखाने के लिए एक गाइड की जरूरत होती है, कोच की जरूरत होती है, जो जिंदगी में आपको आगे बढ़ाए कि आपको लाइफ में क्या करना है. बिकॉज एवरीवन कम्स ऑन दिस अर्थ फॉर अ पर्पस विच वी फॉरगेट. जब हम पैदा होते हैं ना, तो वो इस भीड़ भाड़ की दुनिया में हम भूल जाते हैं कि हम क्यों आते हैं. So there has to be a purpose behind for this life, and you only get when you hold the hand of someone to guide you. Yes, mentor is needed, right? So I think we should end the session here, ma'am. Thank you so much for joining with us today and giving us this busy schedule, giving us your time. And I would like to also thank the management of our university, who is always supporting and motivating to conduct such webinars. Thank you so much, ma'am, for joining. Thank you so very much. And thanks a lot, everyone, for watching this webinar. And plus, thank you, Parul University. Thank you, Vaishali. Thank you, Hemal Patel ji, for inviting me as a guest speaker on your esteemed platform. And I would like to request everyone, if anybody wants any help or any support kind of a thing, so that you can contact me on my website. It's www.narendrakaur.in. Plus, there's a contact number is there on the website. If you really need that, you need support to become your mentor or a guide or a coach, or in any kind of a sessions you want counseling or coaching, please contact me from my website. Thank you so much. Thank you so much. Great. Bye-bye. All right. Thank you.